अब किन किन वॉर्स में अपना पार्टिसिपेशन कर चुके हैं एंड टेल मी समथिंग अबाउट दैट। See, I was commissioned in the army in 1985. मैंने अपना बेसिक जैसे कोर्स खत्म किया तो मैं रेजिमेंट में पहुंचा था। हम लोग बाय एयर जाते थे, या तो लद्दाख से जाते थे या चंडीगढ़ से जाते थे। अभी पुलवामा वाले मैटर में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते रहे, अभी जो सिंदूर वाला ऑपरेशन हुआ था उससे पहले जो कश्मीर में अटैक हुआ था, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाइना हमेशा पाकिस्तान को बैकअप करता है। Traditionally, we've had a lot of bilateral issues with China. China के आसपास की सारी countries, including 150 odd countries, they are part of Belt and Road Initiative. India is not. बट जिस तरीके से आर्मी को सपोर्ट किया जाता है, आई थिंक दैट्स वेयर वी लैक। मैं इसको कुछ और तरीके से देखता हूँ। I think we suffer in procurement. तो वो स्पेसिफिक जनरेशन ने आपको किस तरीके से ट्रीट किया when you got into the corporate and when they heard that this is the history of yours and that sort of a contribution you have given to this country? Actually, I was very lucky. I must thank my stars. So he basically understood ये किस बैकग्राउंड से आए हैं। तो मेरा जब इंटरव्यू भी उन्होंने लिया तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा था कि आप ये बताइए आप क्या कर सकते हो। Welcome everyone for the another episode of The Power Play by Shan Daniel, and that might be a little different introduction, but I'm so happy to have Colonel Vineet on the board today, and his history when it comes to the forces and the way he shifted towards the corporate is just so amazing, and we'll definitely talk further. Thank you so much, Colonel Vineet. Thank you, Ashish, for inviting me. And before we start, जो भी geopolitical, I'm not talking about the political, but जो भी geopolitical scenarios हैं and जो आपने आर्मी में अपना टाइम दिया है, what is the actual definition of देशभक्ति according to you? Okay, so देशभक्ति से आपका मतलब patriotism, Yeah, right? patriotism. That's Yeah, what you mean, exactly. right? So you're asking a soldier, Yeah. right? So for a soldier, patriotism is loving your own country. And when you say loving your own country, it's not loving the land of your country alone. You love your people. Patriotism is about performing your duty. As a soldier, I'm just supposed to perform my duty. I'm being trained for that. I don't ask questions, and जो मेरा काम है मुझे वो करना है. It's as simple as that. अगर आप एक नॉर्मल आदमी के लिए पूछेंगे पेट्रियाटिज्म क्या, आई थिंक उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बिकॉज ही इज ऑल्सो सपोज टू जस्ट लव हिज कंट्री, इंश्योर दैट व्हाट ही डज इज प्रोडक्टिव, उसकी कंट्री प्रोग्रेस करे, जिस काम से वो काम कर रहा है उस काम से उसकी कंट्री प्रोग्रेस करे. एंड देयर आर नो नेगेटिव वाइब्स इन पेट्रियाटिज्म एक्चुअली. सो व्हाटएवर वी सी टुडे इज डिफरेंट, वो कहानी अलग है. लेकिन आपने पेट्रियाटिज्म पूछा तो पेट्रियाटिज्म तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में इट्स लाइक लविंग योर कंट्री, लविंग योर पीपल and just doing your job so that your country is progressive. Being a part of society जहाँ पे I also see people backlashing each other and claiming that person is nationalist and that person is anti-nationalist. How do you define and give a real message to those people? Okay, let's understand what is nationalism in that case. Nationalism is a step ahead of being patriotic. Nationalism is like you say that I am the one. My country is the only country. So what I think is this is more about inclusiveness in being a patriot rather than in being a nationalist. एक जो national patriot होता है वो basically inclusive होता है, वो सबको साथ लेके चलता है. Whereas nationalism में जो आप अभी बोल रहे हो, it's more about मैं. मेरे को एक I don't think you were even born at that time. Pretty sure. 70s में एक movie आई थी, right? And that movie was based on 1971 war. And I remember the operation also. The operation was called Operation Cactus Lily. It was basically an air-ground operation, coordinating operation था. तो उसमें फिल्म के जो हीरो हैं वो राजकुमार साहब होते हैं. वो हंटर जहाज, he flies that hunter. And at the end of the sequence, what happens is that he's supporting a ground operation, and that early morning that operation becomes successful. तो उसमें वो एक डायलॉग बोलते हैं जहाज के अंदर, और दिस अ बैकग्राउंड. इट सेज दैट हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. ये है पेट्रियाटिज्म. अब आप बैकलैश की बात करते हो, वो नेशनलिस्टिक या नेशनलिज्म इज समथिंग व्हेन यू से नहीं आई एम बेटर देन यू, आई एम द ओनली वन, आई विल डिक्टेट, आई विल सी द थिंग्स द वे आई वांट. दैट इज मोर पॉलिटिकल. सो आई फील इन नेशनलिज्म यू स्टॉप क्वेश्चनिंग people. You stop questioning the government. You stop questioning the organization in which you're working, or for that matter, आपके हुक्मरान है, आप उनसे सवाल भी नहीं पूछते हो, क्योंकि your loyalties basically lie to आपके हुक्मरान को. Whereas in patriotism, no. Patriotism is about country. Your country is first for you.
and that is directly related to your duty. बहुत सारी चीज़ें एज अ सिविलियन जाहिर सी बात है वो हम लोगों ने नहीं क्लोजली देखी जो आपने देखी हैं. You told me about the time you also did for UN. I would like to know something about that. Okay, so in the army you get a lot of opportunities, and United Nations missions is one huge opportunity that you get. Mhm. So I had gone on a United Nations mission to Congo, Democratic Republic of Congo, as a military observer. So our role was basically we were peacekeepers, right? Now there's a difference between peacekeeping and peace enforcing. So we were not peace enforcers. Mhm. Peace enforcers carry weapon, Mhm. but we had gone as peacekeepers. So we were without weapons. Okay. All right. So that is interesting. Interesting it is. That is interesting part. So our job was basically to see that whatever is happening over there, right? जो भी वहाँ काम हो रहा है, जो यूनाइटेड मिशन का जो एक एजेंडा है, वो एज पर यूएन के जो मैंडेट है उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट? सो वहाँ पर लाइक आई वाज देयर एज अ टीम लीडर. So my team was a very small team. I had a Swedish guy, I had a Malaysian guy, and I had a Nigerian guy. So we were 4 of us. Mhm. So 4 different cultures, 4 different people, 4 different backgrounds, 4 different countries. Like we always used to share a lot of things about culture, background, and such like things about each other. But we never crossed any kind of boundaries. You also told me that you have been with Pakistanis people as well. Yeah, so Pakistan also contributes a lot of peacekeepers in missions, and in the same mission we were there with Pakistanis also. In fact, we were all living in the same house there, and we made very good friends. But we never talked about Pakistan Army or Indian Army. We never talked about operations. We never talked about the relationship was primarily based on shared culture. Because Pakistan is an offshoot of India. So like my parents have come from Pakistan, so it was very easy for me to talk to them. Most of the people were from Lahore, Punjab के लोग थे वहाँ पे. तो मेरे पेरेंट्स भी वहीं लाहौर से और पेशावर से आए थे. तो वो एक लिंक बनाना बड़ा आसान सा था. खाना पीना हमारा सबका सेम था. But we never carried anything beyond that. No religious talks. हमने कभी फौज के बारे में बात नहीं करी, उनके ऑपरेशंस के बारे में, उनके बारे में. But we had very good man-to-man cultural kind of a connect. But then once they went back, we came back, and then there has been no connect after that. For an easy language, what is the purpose of UN? How exactly it works? मोटिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन? देखिए आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो मुझे नहीं समझ में आता यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल रह गया है. बट देयर वाज अ टाइम यूएन वाज बेसिकली a unifying factor, right? It was supposed to be a unifying factor, but then the main problem with UN is that उसके पास तो पैसा ही नहीं है. वो कहाँ से अपने ऑपरेशंस करेगा? उसकी कौन सुनता है? आज भी आप जाते हैं, you make a statement over there in the United Nations General Assembly, right? There's a lot of applause, there's a lot of things, but then are its rulings or directives binding on the countries? America, for that matter, or any other country for that matter, they have their own laws and they have their own ways of doing things. There is nothing binding so far as UN is concerned. UN is more like, I don't know, should I call it a social organization? Yeah. Now it is. There is nothing where we say that it has got a very strong role to play, but then it is still there. We'll be having like further conversation in a very mixed format. I mean, there's nothing specific कि मैं कोई line format में बात करूँगा. But you said like you served 28 years in the army. Tell me something more about where you were born, your family, and what was the reason for getting into the army and things like that. Okay, so I was born in Andamans. I was born in Port Blair. तो Port Blair में काले पानी की जेल जिसको बोलते हैं ना, तो वो काले पानी की जेल में there was one section which was converted into a hospital. So my father was a civil engineer and he was posted there and they got married there. Like my mom was from Delhi and they got married and went there. So I was born basically in Port Blair, Andamans. From there, dad used to be moving a lot of places. So जहाँ वो जाते थे हम साथ साथ जाते थे. But eventually we settled down in Delhi. I did my schooling in Delhi. I did my college in Delhi. And my mother has been a principal in a school. So we grew up actually in Delhi. Like all children, right? My dad also wanted
become an engineer. So नहीं हुआ. Immediately after the college, around the college, in the time it was finishing, army was always there on my mind. Right, I went to the IMA, I got selected, and then thereafter there's been no looking back. And in the army, you've been all over the place. I've covered the length, breadth of the country. I've been overseas. So I've had a very satisfying tenure in the army for 28 years. And I have a younger sister. My wife is also in the army. She's a medico. Oh. Right, and she also put in about 24 years of service before she put in her papers and she joined my. Moreover, it's very interesting. I mean, you told me about that you are also writing a book. Tell me something about that. Okay, so book writing has always been there on my mind, a very long time, in fact. But then maybe because I could not get the right kind of frame of mind to write it and all this. But then I think it happened in the last about 10, 12 months. So I started writing my book. The title of the book is Spine to Wade. And the subtitle is Leading Generations to Thrive. So it's basically about leadership. And it's more about lived experiences that I have moving from the army to the corporate, because the life is completely different. And the challenges have been completely different. When you were there in the army, when you were there in the corporate, your decision making is completely different. Your hierarchy is completely different. Power play is completely different. Generations are completely different. Churn of people is completely different. So ये सब चीज़ें एक चैलेंज पोज करती हैं किसी भी आर्मी ऑफिसर को जो 27-28 साल 30 साल करने के बाद में बाहर आता है और कॉर्पोरेट लाइफ को ज्वाइन करता है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू एडजस्ट टू एंड मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज कि किस तरह से एडजस्टमेंट होती है. सो आई हैव लिव्ड दैट एंड आई हैव मेड दोज एडजस्टमेंट्स इन माय ओन लीडरशिप स्टाइल, and this is all about the story of leadership, and I realized that eventually principles of leadership will remain the same. The only thing is that you have to keep making allowances and changes for yourself when you grow up. You said that you shifted from army to corporate, and when you are in the army तो एक बहुत rigid mind हो जाता है when it comes to giving commands, and you have been on a very higher designation. How exactly it was when you shifted towards the corporate? Because it totally works different. Yeah, so you're right. I wouldn't say it is rigid mind, but I think we are tuned to a hierarchy. Yeah. I would not say rigid, but then yes, you're tuned to a hierarchy. And hierarchy में क्या होता है आपको पता है, ये आपके बॉस हैं, ये उनके बॉस हैं. So the orders flow from the top. Obviously, before the orders go, there are a lot of discussions. You're part of the discussions depending on your own seniority and experience. Not that you are part of all discussions. बट देन सबसे अच्छी चीज जो वहां ये है कि एक बार आपने डिसीजन ले लिया, उसके बाद देयर इज नो चेंज इन द डिसीजन, इट इज एग्जीक्यूशन. तो उसके बाद कोई डिस्कशन भी नहीं है. उसके बाद आपकी ट्रेनिंग है, आपको वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. तो आप वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ट्रेनिंग कीजिए, अपनी कमांड को ट्रेन कीजिए, एंड यू परफॉर्म. नाउ व्हेन यू कम टू द कॉर्पोरेट, क्या होता है ना, आपका बेंट ऑफ माइंड तो वही है, बिकॉज यू फील दैट देयर इज अ हायरार्की, whereas the corporate structures are more flat in nature. They're more horizontal in nature, and rightfully so, because वहाँ आपको एक अलग तरीके की इनोवेशन चाहिए. वहाँ आपको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की भी सुननी है. वो हो सकता है 22-23 साल का कॉलेज से निकला हुआ लड़का हो, जिसने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करी हो एंड डेटा एनालिटिक्स में सुपर हो. वो आपको एबीसी नहीं पता उसकी, आप कहाँ जाएंगे? अब आप कौन सी हायरार्की की बात करेंगे? यू हैव टू लिसन टू द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और यू हैव अ कस्टमर जो आपका एक्चुअली आपका गाइड बन जाता है, क्योंकि आपको तो सर्व कस्टमर को करना है ना. तो कस्टमर आपका गाइड बन जाता है. अब आप वहाँ कहाँ अपनी रिजिडिटी और अपनी कहाँ एक स्ट्रेट बैक को लेके पहुंचेंगे जी मैं तो इस तरह से ही डिलीवर करूंगा. आपने तो वर्क दैट वे. हैव यू एवर स्टक इन अ सिचुएशन जहां पे मेनी टाइम्स, बहुत छोटे, many times you see when I moved to the corporate, like initially it was very difficult to understand कि यार ये करूँ तो कैसे करूँ. क्लियर डिसीजन नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं, इन्फ्लुएंसर बहुत हैं, सिस्टम्स नहीं हैं. अगर सिस्टम्स हैं भी तो वो इस तरह से हैं कि आप उनको कभी भी मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो उनको, बेसिकली बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सिचुएशन. आप भी बाजार में जाते हैं, कस्टमर हैं, तो आप भी 4 जगह जाके सोच के लेते हो ना. कोई भी चीज लेते हो तो कोई भी चीज सोच के लेते हो. तो अगर आपको वो लगता है यार हरे रंग का ये है, ये 2 रुपए महंगा है, तो उन्हें लाल रंग का ले लो, चलो 2 रुपए सस्ता है, लाल रंग में क्या. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द कस्टमर्स चॉइस, प्रोडक्ट चेंजेस, पीपल चेंज, जनरेशंस आर डिफरेंट. आप वहाँ किन जनरेशंस के साथ काम कर रहे हो?
आप 21 साल से 60 साल 62 साल के लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि बेबी बूमर से लेके आप अब जेन अल्फा के साथ काम कर रहे हो, तो आप क्या अपनी स्पाइन को और अपने आप को क्या रिजिड रखोगे? तो आपको यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ अलाउंसेस फॉर। तो वो स्पेसिफिक जनरेशन ने आपको किस तरीके से ट्रीट किया व्हेन यू गॉट इनटू द कॉर्पोरेट एंड व्हेन दे हर्ड दैट दिस इज द हिस्ट्री ऑफ योर्स एंड दैट सॉर्ट ऑफ अ कंट्रीब्यूशन यू हैव गिवन टू दिस कंट्री? Actually, I was very lucky. I mean, I must thank my stars. I came to a company where my boss was a person whose father was in the army. So he basically understood ये किस बैकग्राउंड से आए हैं। और मेरा जब इंटरव्यू भी उन्होंने लिया था तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा था कि आप ये बताइए आप क्या कर सकते हो। एंड देयर आफ्टर ही गेव मी गुड 1 year टू प्ले and find out as to what my strength is and what I perform. मेरा इंडक्शन कॉर्पोरेट में इस तरह से हुआ, ऐसा इंडक्शन होता नहीं है लोगों का। लोगों का इंडक्शन जॉब डिस्क्रिप्शन पे होता है। मेरे लिए कोई जॉब डिस्क्रिप्शन थी नहीं। I was I think hired on a strategic role, so I had no job description. So I was given a full playground कि आप प्रोड्यूस कीजिए। I think उनके दिमाग में ये था कि कहीं ना कहीं I can bring in that kind of discipline, I can bring in that kind of pride, I can bring in that kind of culture from the organization, from the army into the organization, because he had seen that and he knew that maybe somebody like me from the army could bring in. So मेरा indoctrination या मेरा जो induction था वो इस तरह से हुआ and I think I was given a lot of respect by everybody. मुझे by and large सब कर्नल साहब बुलाते हैं office में, but I don't mind. The younger generation, they even call me by name. My first name was Vineet. Well, they are generally afraid because थोड़ा सा उनको because मेरा aura ऐसा है या आप जो मर्जी बोलिए, I walk very stiff and I walk very fast in the office. तो इन सबको ये लगता है कि नहीं ये फौजी है। I maintain that kind of thing. So वो एक aura बोलिए या एक whatever it is, people get to know that okay he is a फौजी, तो थोड़ा सा वो है। But then I think अभी जो generation है, you have to give them an allowance. You call you by your first name, so that is their culture. It's all right. आपको accept करना है। I also did some studies in army and I've also little bit trained in that portion. And जहाँ पे आप हर एक time zone के लिए disciplined होते हो, this is the time you have to get up, this is the time you have to do it, ये specific task के लिए। And जब आप एक corporate में आते हो जहाँ पे लोग उस तरीके से disciplined नहीं है जिस तरीके से आप रहे हैं, तो क्या वो शुरू में फ्रस्ट्रेटिंग था? नहीं, आई डोंट थिंक इट इज अ फ्रस्ट्रेशन। आपको ये समझना है कि वो क्यों कर रहे हैं। देखिए, अब अगर किसी को यूएस कस्टमर को सपोर्ट करना है तो उसका दिन दोपहर को 1 बजे ही शुरू होगा ना, है ना। मेरा दिन 9:30 बजे ऑफिस में शुरू होता है। आई रीच माई ऑफिस एट 9 o'clock बिकॉज दैट इज द लेट डाउन टाइमिंग फॉर द ऑफिस। तो मैं तो 9 बजे पहुंच जाता हूँ, बट वो आदमी आ रहा है 12:30 बजे। अब मैं आई कांट कीप अ ग्रज अगेंस्ट हिम बिकॉज हिज टाइम जोन स्टार्ट्स एट 1 o'clock। सिमिलरली मिडल ईस्ट है, अब मिडल ईस्ट में उसकी फ्राइडे की छुट्टी है, वहां पे मेरी संडे की छुट्टी है। अब मैं फ्राइडे को इंटेंशनली तो नहीं मीटिंग रखूंगा ना उसके लिए कि भैया आप दफ्तर में आइए। सो आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट and people have to be given that kind of leeway and flexibility in the corporate to perform, because after all technically अगर perform करना है तो वो specialist है, आपको allowance देना पड़ेगा so that they can innovate and they can bring in that kind of value to the work that they do. When it comes to your past and present, you have a great experience of being disciplined, combat, army. Now you're having great experience of being a lead role in a company, also the HR. What is the current status of India in terms of the force, in terms of the growing in the IT sector? I think if there is one sector which is outperforming all sectors is IT sector. Let's face the fact. I think मैं यहाँ कुछ और भी कहना चाहूँगा IT sector के। IT sector जब कंसीव हुआ था, लाइक व्हेन IT एक्चुअली केम समवेयर अराउंड 80s में, हमने राजीव गांधी इज गवर्नमेंट एंड द कंप्यूटर्स आर इंट्रोड्यूस्ड, तब से एक माइंडसेट रहा है IT सेक्टर का, और वो है सर्विस माइंडसेट। मुझे नहीं याद कोई ऐसी कंपनी इंडिया में है जो आज गूगल को या माइक्रोसॉफ्ट को ये बोले आई विल compete with you in product making. You understand? दो तरीके के काम है, एक सर्विस प्रोविजन है और एक बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला काम है। इंडिया को हमेशा से आईटी में एज अ सर्विस सेक्टर माना गया है और बहुत
रेवेन्यू भी है, ऐसा नहीं है. HCL देख लीजिए, TCS देख लीजिए, दे व्हाट आर दे डूइंग? दे बेसिकली अब उनके सोल्यूशनिंग शुरू हुई है, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, बट इवेंचुअली दे स्टार्टेड एज सर्विसेज. मैं यूएन में था तो वहाँ TCS के लोग आके IT कंप्यूटर सेटअप और बेसिकली जो नॉर्मल IT का काम किया करते थे, तो मैं उनसे पूछा करता था कि आप क्या करते हो, कहाँ से आते हो. तो उन्होंने उस टाइम पे बोला जी हम वी आर फ्रॉम TCS. वो यूएन में थे वहाँ पे, बेसिकली अगेन प्रोवाइडिंग सर्विस. राइट नाउ द फ्यूचर ऑफ IT इज एक्सट्रीमली ब्राइट, मोर सो विद द AI कमिंग इन. राइट, जितना नॉलेज हम इम्पार्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टैलेंट all over the world, I don't think anyone else is doing so much. Okay, but are we able to retain that talent here in India is the question. Yeah, exactly. Especially the IT. I will not talk about the others, but are we really जो क्लास टैलेंट है जो हमारे को प्रोडक्ट मेकिंग में काम आ सकता है. लाइक माई कंपनी इज अ प्रोडक्ट कंपनी, सो आई कैन टेल यू दैट the development in a product company or the growth of a product company is slightly slower because they have to establish their product. Right? कोई भी प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार प्रोडक्ट एस्टैब्लिश होता है, देन यू हैव स्टिकी कस्टमर्स. वो कस्टमर्स आपके पास परमानेंट रहते हैं और ईयर ऑन ईयर आपके पास रहते हैं वो कस्टमर्स. लेकिन उनको प्रोडक्ट में भी चैलेंज देने के लिए आपको इनोवेशन चाहिए ना. तो इनोवेशन कहाँ से आएगी? इनोवेशन तो आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट से आएगी, और वो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में आपके जो टैलेंट है वो होना चाहिए, उसको रिटेन करना बहुत जरूरी है. When it comes to being an entrepreneur in India, the current situation you see, do you think is it hard or is it easy to be an entrepreneur in India in current situation? See, I personally feel today's time is the time of entrepreneurship. आज अगर आप मुझसे पूछें और मुझे कुछ बोलें कि आप अगर दोबारा कुछ करना चाहोगे तो क्या करना चाहोगे, और मेरे से आज ये कोई सवाल करे तो मैं ये बोलूँगा कि भाई बजाय जॉब लेने के, I would want to be a person who can give jobs, right? So entrepreneurship is the in thing today. It's easy to become an entrepreneur. I have a serious doubt. You see, this government has done tremendous amount of work in supporting startups. But then how many startups last beyond the kind of seed money they get? जैसे ही आपकी seed money खत्म होती है, startup dead हो जाता है. क्यों है ये? 70 to 80% of the startups die. Why? It's basically because we have a problem with ease of doing business in India. That is what I feel. I'm not here to talk about politics to you basically, but there's one program that was introduced previously and that was Make in India, right? And you have a great knowledge of finances as well. Do you think वो program successful हुआ था? Yeah. Intention behind Make in India was extremely good. When you say Make in India means like what is America trying to do today? Yeah. You know, America is also trying to say that I will not levy tariffs to you, right? If you come and make things in America. True. Whether you are a Russian company, whether you are a Singaporean company, whether you are an Indian company or any company, you come and Make in India is that kind of a program. So there is the intention behind Make in India is extremely good. It was supposed to give us a manufacturing boost. Okay. But then somewhere down the line, I don't think people could understand, and the kind of support which people were supposed to get so far as Make in India was to work, that has come in. That's the reason Make in India is now more of a slogan left behind. Who should be taken in accountability for the failure? I think it's both the people in the government. It's both the people in the government. People basically looking for a quick buck. You tell me, can you make anything without R&D? No. Right? You know what is the GDP percentage of R&D that India has? It's just 0.56% of GDP. And out of 0.656% of GDP, percent of GDP in R&D that India spends, about 60% is coming from the government. Only 40% of contribution in R&D is from the private sector. Yeah. जब आप पैसा ही नहीं डालोगे R&D के अंदर तो अपना प्रोडक्ट कैसे बनाओगे यार? तो आप क्या कर रहे हो मेक इन इंडिया में? आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, फोन्स को असेंबल कर रहे हो, समझ रहे हो? सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर assembling, you are still getting the stuff from outside, and you have created a system within India where you are assembling things. जब तक आप R&D में पैसा नहीं डालोगे, जब तक आप टैलेंट को स्किल नहीं करोगे, जब तक आप उनके लॉज को सिंपल नहीं करोगे, आप उनकी टैक्सेशन सिंपल नहीं करोगे, जब तक उनके कॉर्पोरेट बेनिफिट सिंपल नहीं करोगे, आप मेक इन इंडिया कैसे करोगे? There's a lot of slogans like आप भी देखते रहते होंगे on media, that's like India versus Pakistan, India versus China. But what is the reality of India versus China when it comes to the growth of both of the countries? Do we really compete with China?
What is the reality? This is a question to be asked. Are we competing with China? You see, till 1990, China was way behind the world. So from 1990 to 2025, in 35 years, see where China is today. China has created consumers all over the world. China has created markets all over the world. Besides creating markets, China has made inroads into the countries so that its own economy can develop, the Belt and Road initiative which has taken. Now, what is Belt and Road initiative? It's basically so that China का जो सामान है वो कहीं ना कहीं दुनिया में पहुंचे. And China is spending so much of money into 155 odd countries today. Why is it doing so? So that Chinese economy grows. इतना फोकस अगर एक कंट्री में है और हम एक जगह पर आज भी बात कर रहे हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग पुअर है, या आज हम ये भी कह रहे हैं कि जी मेक इन इंडिया इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, ये सवाल है, तो आज तो हम कहाँ उनकी बात कर रहे हैं, कहाँ हम अपनी बात कर रहे हैं. चाइना, यू सी, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन चाइना. We import, I think, about $100 billion worth of Chinese stuff in a year. What is the export? $14 billion. It's not even half. Half? 14%. Yeah. Right? So your deficit at this point in time, so far as trade deficit is concerned with China, is approximately $100 billion, $95 billion. So China ने consumer create किए हैं, China ने markets create किए हैं अपने लिए. And it's not only India. Heavily rely on them. No, obviously, that's what I'm saying. Because you see, they manufacture in bulk, they manufacture cheap stuff, they put in money on R&D, right? And they put in money on your need. वो आपकी नीड देखते हैं, आपकी नीड, आप बोलिए आपकी नीड क्या है, आप यहाँ पर सोचने से पहले आप ड्राइंग बोर्ड पे जाना चाहते हैं, वहाँ वो चीज़ बन जाती है. This is what China is, that is how it is going. So there is a lot of thought which has gone in the Chinese, to come up as an economic power. Why do you think China is challenging America today, and America is bothered today about no other country more than China? So it's basically, and the way Chinese have invaded America also in their economy. आप यूरोप चले जाइए, आपको वहीं चाइनीज स्टफ मिलेगा, वो लेवल बदल जाएगा. आप you talk to those people. Maybe even in India, there are some millions and billions of dollars of company. जो कि what they are doing exactly, they are just doing white label stuff. They buy from China, put a logo and sell over here. That's what they do. चाइना बनाता है, वहां पर जाती है चीज, आपका लेबल वहां चेंज हो जाता है यूरोप में. जो चाइना जो 10 यूरो की बना के आपको भेजता है, आप वो 150 यूरोस की बेचते हो. And you say make in something like whatever country. But then that is how China is working. What exactly is the mindset that they are ahead of us? I think there is a lot to do with the kind of constitution they have and the kind of government they have. They are communists. Yeah. Now, while they are communists, there is so much of difference between communism and democracy. यहाँ आपकी आवाज है, आपकी सुनते हैं, आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी कह सकते हो, आपको नहीं करना, आप उठ के जा सकते हो. You don't want to do it, just get up and go. Nobody stops you. Nobody puts you back in jail, right? That doesn't happen in communism that way. They have a very clear focus. There is a directive which comes from the top, right? They have given you all the wherewithal. There's one thing as well. I was listening to someone, I don't remember, कि जब हम बाहर जाते हैं तो I'm a Christian, you're a Hindu, that guy is a Muslim. But any Chinese person who goes anywhere in the world, he's still a Chinese. He don't have any religion. I mean, he's just Chinese. That's what he represents. But Absolutely. Unfortunately, I personally feel that's where we lack as well. हम बाहर भी जाते हैं तो we model कि हम ये हैं, by religion, by culture, by this and that. हम पंजाबी हैं, हम सिख हैं, हम गुजराती हैं, and आज भी हम यही कहते हैं. And we find our communities in different countries. Yeah, we find a community within that. True. So actually, this is all. इसको हम आपस में जब भी कभी discuss करते हैं friends, so we say these are pitfalls of democracy. Yeah. These are not pitfalls of democracy. I'm not saying democracy is bad. Democracy is the one जहाँ सब कुछ develop हो सकता है, आपको इतनी freedom है. What are the pros and cons of the democracy? Oh, that's what I'm saying. You have that kind of right to say whatever you want to and do whatever you want to. You have a right to religion. You have a right to speech. You have a right to do anything that you want. You can develop actually. लेकिन हम इसको direction ही हम democracy में एक अलग तरीके के अगर ले जाएंगे तो वो फिर मेक इन इंडिया जैसी चीज जो है वो फेल हो जाएगी.
आपने इतने सारे टॉयलेट्स बना दिए, आज कितने टॉयलेट सर्वाइव कर रहे हैं उसमें से? अगर ये चाइना होता तो वो सारे के सारे टॉयलेट सर्वाइव कर रहे होते, बिकॉज इज सेंस ऑफ ड्यूटी देयर। आपने बना दिए, आपने यूज नहीं किए, आपने मेंटेन नहीं किए, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो बनने का पैसा आया था वो आपने नहीं दिया। वो आप जैसे और मेरे जैसे लोग यहाँ टैक्स दे रहे हैं, हम हमारे पैसे से बना या किसी के भी पैसे से बना, आपके पैसे से नहीं बना, तो आपको उसकी कीमत नहीं पता। ये डेमोक्रेसी है। एंड मोर ओवर मेरे को ये भी लगता है, आई जस्ट टॉक टू माय ब्रदर समटाइम इन अ वेरी फनी वे, कि हम आज भी फ्लॉन्ट करते हैं कि हमने इतने टॉयलेट्स बनाए, हमने इतने सिलेंडर्स दिए और हम लोगों ने ये चीज़ें दी, विच इज़ वेरी बेसिक, एंड कंट्रीज हु आर वेरी प्रोग्रेसिव डोंट इवन टॉक अबाउट दिस थिंग्स। आई वाज रीडिंग अ डेटा सम टाइम बैक। डू यू नो ये आयुष्मान भारत के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे राशन वाला प्रोजेक्ट है, हाउ मेनी बेनिफिशियरीज? 75 to 80% इंडिया इज अ बेनिफिशियरी। क्या मतलब है इसका? आज भी लोग आपके फ्री राशन लेने के लिए 75% से 80% लोग बैठे हैं। आप इकोनॉमी कैसे डेवलप करोगे मुझे बताओ? हाउ विल यू डेवलप दिस इकोनॉमी? व्हेन you have 80% or 75% of your population which is waiting to get this 5 kgs of rice or whatever they are dependent on. So आपका GDP पर कैपिटा इनकम कितना है? $2,500। $2,500। चाइना का कितना है? अप्रॉक्सीमेटली $38,000। राइट, दिस इज चाइनाज। इसराइल का कितना है? $54,000 अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर। आप क्या बात कर रहे हो? आप $2,500 पर कैपिटा इनकम जीडीपी लेके हम बात करते हैं, तो अल्टीमेटली घूम फिर के तो इसका मतलब यही हुआ ना, दैट यू डोंट हैव इनफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, दे आर नॉट प्रोडक्टिव। You are 140 crore plus. How many of us are productive? That's a question. You said one thing about the US, that's कि Donald Trump भी इसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं. What this is a second version you can say make in India, that is make in US. तो जो भी controversies हैं, तो do you think he is doing right on his part for his own country? देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ that I will protect the interest of my country. Yeah. Trump has the right to protect the interest of his country. So let's face the fact. Yeah. And Trump has a mandate. The mandate he came on was basically make America great again. Yeah. Now, why is that so? Because over a period of time, America has suffered. Its economy is in shambles. People are saying, get our jobs back. There is a mistrust in the political circles. Ethnicity is a problem, right? The debt on your credit cards is so high today in America. Your manufacturing is low. You are spending $600 trillion on defense production and sale of your defense equipment overseas. Means he too have a right to protect his. So at the end of the day, what happens is, आपकी बाकी की जो कंट्रीज हैं वो तो अंदर आ चुकी ना, उन्होंने तो अपनी इकोनॉमी आपकी इनरोड्स बना लिया, राइट? जॉब्स जो आपकी होनी चाहिए थी वो कोई और ले रहा है ना. सो अमेरिका इज नॉट रॉन्ग इन व्हाट इट्स सेइंग, बट they have a right to say. Now the point is, how do I as an Indian see is another problem. Yeah. Right? I have to protect my interest. मैं ये नहीं कह सकता कि अमेरिका ठीक कर रहा है तो मैं अपना इंटरेस्ट लूज कर दूं और मैं वहां जाके डोनेट व्हाटएवर आई हैव. दैट इज नॉट, बिकॉज़ आई इंटरेस्ट ऑफ माय ओन कंट्री इज आल्सो इंपॉर्टेंट. So I would look at it from two different ways. When it comes to my own interest, I'll protect my interests. There's one thing I also see, I notice, I'm pretty much sure you must be aware about that thing as well, and that is the migration of Indians towards different countries. I've been to Dubai like multiple times, and I realize if you talk about the real estate market of the Dubai, सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी उधर बाय करते हैं, India is one of them. I think it's on first or second. And the way Indians are migrating towards West is just a large number. And I'm just talking about millionaires. Tani 8,000 or 5,000 something was the number for the last year. And it's getting up and up and up. Why it's even happening? So far as Indians are concerned, we are just about 2% or 3% Indians who are actually in that zone जो आप बात कर रहे हो. Let's face the fact. Yeah. We have a very strong middle class, strong in numbers or percentages, right? Well, they are not the ones who are going overseas and buying properties. What are they doing?
The middle class is basically going to get educated over there and do jobs. The reason is that they cannot afford it. They cannot afford option होता तो वो उनके भी पास यही ऑप्शन नहीं, तो वो कितना परसेंट लोग हैं, 3% या 4% लोग हैं या 5% लोग हैं या इंडियन पॉपुलेशन है, तो हम उनको देख के जनरलाइज नहीं कर सकते. बट यस, यू आर राइट, इवन द मिडिल क्लास हैज गॉट द सेम ड्रीम्स एज द क्रीमी लेयर. ओके, एंड व्हाट आर द ड्रीम्स? मैं अगर पढ़ाई करता हूँ, आई मस्ट हैव अ गुड लाइफ, आई मस्ट हैव अ सोशल सिक्योरिटी, माय क्वालिटी ऑफ लाइफ should be good, right? And these are basic things that I want. I should not be running around. Like मेरे को मेडिकल के लिए भागना नहीं है. I don't want to run for medical, right? मुझे जॉब के लिए नहीं भागना है. I must have a secured job. I must have. And एक Indian thought process भी हमारा होता है. We look for security. US and all, they don't really invest money in that. But then Indians are like I want my security in life here. And after मैं retire होगा तो क्या करूँगा? उसके बाद तो मुझे income चाहिए ना. Migration is basically for two reasons. One, for the middle class. One is primarily to get a good education and thereafter permanently migrate, settle down there because you want a good life. Yeah. Right? And the second is people who are entrepreneurs here, they want a market. Now they also need to go to the countries where they can sell their production, right? And when they go to US, when they go to Europe, or when they go somewhere else, they find, is it difficult to do business with them, or is it difficult to do business within? Yeah. So when they find it's easier to do business there because of no corruption or low corruption, easier rules or whatever, well, they do migrate there. Then they say, okay, fine, let the manufacturing things or let things continue here. Let's do business there. And then obviously that gives you the better quality of life. Abhi, we have always seen China as our enemy, and back and forth कभी relationship बहुत चाइना के साथ better हो जाते हैं, कभी bitter हो जाते हैं. अभी पुलवामा वाले मैटर में बहुत सारे एक्सपर्ट्स के बोलते रहे हैं. सॉरी, अभी जो सिंधु वाला ऑपरेशन हुआ था उससे पहले जो कश्मीर में अटैक हुआ था, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाइना हमेशा पाकिस्तान को बैकअप करता है इन टर्म्स ऑफ प्रोवोकिंग देम टू फाइट, और फंड करता है उनको. एंड नाउ वी आर जस्ट शेकिंग हैंड्स विद चाइना बिकॉज ऑफ जो भी टैरिफ्स का इशू यूएस के साथ हो रहा था. हाउ डू यू सी दैट? देखिए, traditionally we've had a lot of bilateral issues with China. We have a lot of border related issues with China, and the kind of investment, like मैं अभी आपसे बात कर रहा था उनके बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में, आपको हैरानी होगी, चाइना के आसपास की सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग 150 odd countries, they are part of Belt and Road Initiative. India is not. Okay. Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia, all countries are part of Belt and Road Initiative. India is not. Reason, because of our differences, so far as bilateral differences that we have had, and there's so many of them. China का investment जो पाकिस्तान में है, that has been a huge investment, right? Lately जो उन्होंने CPEC पिछले 10-12 साल में शुरू किया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो नॉर्थ से शुरू होता है और ग्वादर तक जाता है, उसमें they were supposed to develop roads, they were supposed to develop railways, and the kind of economic growth that was supposed to take place. Now चाइना जब चारों तरफ से इस तरह से काम करता है, ऑब्वियसली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को और इंडिया के डिफेंस के लिए ये एक थ्रेट हो जाता है, राइट? एंड चाइना ऑल्सो नोज, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, आज हमारा जो रिलेशनशिप चाइना के साथ चेंज हो रहे हैं या होने चाहिए, चाइना ऑल्सो नोज दैट इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट फॉर इट. इंडिया इज नॉट अ स्मॉल मार्केट. भाई 140 करोड़ लोग आपके पास में हैं, राइट? वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. हमारी परचेजिंग पावर भी पिछले 10-12 साल में इंप्रूव हुई है, राइट? लेकिन हमारा सोच वही है, आज भी हम सब्जी के साथ धनिया फ्री मांगते हैं. इसका मतलब क्या है? हम आज भी वो सस्ती चीज पकड़ने की कोशिश करते हैं. 10 दुकानें घूमेंगे बट उन्हें सस्ती चीज चाहिए. अब जब सस्ती चीज पकड़ोगे तो वो चाइनीज सामान जो है आपको सस्ता मिलता है, वो मैं मार्केट क्रिएट कर रहा हूं उनके लिए. जब मैं उनके लिए मार्केट क्रिएट कर रहा हूं तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हम उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो चाइना, सो फार एज द डिफेंस इश्यूज आर कंसर्न, बायलैटरल रिलेशंस प्रॉब्लम होने के बावजूद भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता वो. India has a very strong presence in Southeast Asia today. There is no doubt about it. The way our economy has been coming up,
India has a very strong presence. It's a very strong market. It's a good thing and a bad thing both. Because when it's a good, when it's a market for others, इसका मतलब हमारी अपनी manufacturing और production जो है वो problem है. Exactly. है ना? And there's one thing I realized. I was listening to one techie guy where he was explaining one thing. There are like apps like Instagram, TikTok, and things. The one thing I wanted to share, which is very surprising, how they even works on algorithm. Like few years back, TikTok was banned in India. बट जो कंटेंट उधर टिकटॉक पे दिखाया जाता था, दैट वाज एजुकेशन, दैट वाज मिलिट्री, दैट वाज समथिंग विच इज पुशिंग यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्रीज ग्रोथ. बट वही एल्गोरिदम वाज टोटली वर्किंग डिफरेंट इन इंडिया. Absolutely. Right, which was brainwashing the teenagers, making them do some silly things like getting into pranks, dance, and all that. I don't judge on that, but they are so rigid, and they're like so backed up when it comes to turning the brain. देखिए, चाइना आपको जो भी दिखाता है या जो भी दे रहा है वो कंज्यूमरिज्म क्रिएट कर रहा है आपके लिए. आपको एज अ कंज्यूमर क्रिएट कर रहा है, तभी उसकी इकोनॉमी. उसको इंटरनल कंज्यूमरिज्म से कोई मतलब नहीं है. आप चाइना, आई हैवंट बीन टू चाइना माई सेल्फ, बट I have a lot of relatives, who do business in China, and they come back and they tell me there are only a few states in China which are extremely modern, like Shanghai देख लो या इस तरह की आप states देख लो. बाकी they're not as shining or as developed as those Beijing जैसी. Not like that. So उनको ये भी पता है कि अगर हमने इस तरीके का इंडिया जैसा कंज्यूमरिज्म या यूएस जैसा कंज्यूमरिज्म अगर हमने ये चाइना के अंदर काम कौन करेगा? फिर तो सब जो हमारे जैसे आज, आई एम सॉरी बट देन द फैक्ट इज रिमेन, आप एक लड़के को आज नौकरी मत दीजिए, लेकिन उसके हाथ में आज एक 20-25-30 हज़ार रुपए का मोबाइल फोन पक्का होगा, और वो मोबाइल फोन पे क्या कर रहा होगा? ऐसे रील देख रहा होगा, आपका. This is what he does. He's not bothered about jobs. He's not bothered about earning. But they can't afford to do that. उनको भी पता है ये कि अगर ये चीज वहां करनी शुरू होगी तो काम कौन करेगा? तो फिर मार्केट्स कौन देखेगा? Who's going to produce to supply to the world, and how will the economy grow, and how will China become a huge economic power today? And that's how I see these mindsets passing towards generation to generation. यही चीज वो generation to generation pass. Exactly, and it is not only that. वहां जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, स्टेट उसको सपोर्ट करती है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके लिए लॉज रूल्स ऐसे हैं कि आप कुछ भी नया इन्वेंट करने की कोशिश कीजिए या करेंगे, everybody comes together and helps you. That is what China is. They encourage you to invent and bring up new things so that new markets can be opened up. Whether it is consumer market, whether it is defense market, कुछ भी बोलिए आप fly the best of the aircrafts today, defense, the air force aircrafts, the jets, the best of the aircrafts. कैसे? वही टेक्नोलॉजी है, वही दिमाग हमारा है, वही दिमाग उनका है. आज तक हम अपने जेट के लिए अपना इंजन नहीं क्रिएट कर पाए. चाइना इज ओनली ऑन J-35. And I know ये क्वेश्चन मेरा बाद का था, लेकिन it's quite relatable for what you're saying. Might be controversial, but are we in a position to combat with China if anything goes wrong? I think ये थोड़ा hypothetical है. वो मैं hypothetical इसलिए बोल रहा हूँ because personally अगर आप मेरी सोच समझेंगे तो I don't think it is in the interest of China to open up a front with India. Like face to face. Directly. क्या जरूरत है? Why should China open up a front with India? Directly combat जो 1962 जैसा था. जरूरत ही नहीं है उसको. आज उसके पास प्रॉक्सी कंट्रीज इतनी हैं कि वो उनके थ्रू उनको सपोर्ट करके, उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करके, उनको डिफेंस हार्डवेयर में सपोर्ट करके ही कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स विद इंडिया. और दूसरी चीज ये है, उनको भी पता है कि अगर हम एक नया फ्रंट यहाँ ओपन करते हैं तो हमारी इकोनॉमिक मार्केट सफर करेगी. क्यों करेंगे वो? सो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को हमेशा में से कोई भी बात करता हूँ, आई पर्सनली से आई थिंक इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दैट इफ इंडिया गोज टू वॉर विद चाइना. Well, but then this doesn't mean that India should not be prepared. You should be very cautious with because the China. way they invest in their army is just crazy. I mean, it's just way crazy. जिस तरीके से, I mean, as far as I see, the way they prepare themselves. Yeah, it's not only that. Their training is harsh, and they prepare their people basically People Liberation Army. उसको भी इस तरह से तैयार किया उन्होंने, and उनकी जो बॉर्डर प्रिपरेशन है वो भी बहुत स्ट्रांग है.
And moreover, I never say, I mean, Indian Army is way capable enough to face anything. But जिस तरीके से आर्मी को सपोर्ट किया जाता है, I think that's where we lack in terms of resources. मैं इसको कुछ और तरीके से देखता हूँ. So far as the Indian Army is concerned, I think we suffer in procurement. मुझे अगर आज एक combat aircraft चाहिए या मुझे अगर आज एक self propelled gun चाहिए तो मुझे आज चाहिए ना, so that I can upgrade my defense capability. आप मेरे को 5-year plan, 10-year plan, 15-year plan में मत फंसाइए ना. हम हर साल डिफेंस बजट में से कुछ बजट सरेंडर कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? वही बात आ गई. Ease of doing business is a problem with us. We have such a strong bureaucracy today. Firstly, people don't understand what is our requirement. आप वहां हर जगह कटौती करने की कोशिश करते हैं. मैं बोलता हूं मुझे 10 टैंक चाहिए, आप बोलते हैं आप 4 से क्यों नहीं काम करते? आपके बजट नहीं है. तो अगर आप मेरे साथ इस तरह से करेंगे, मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी प्रॉब्लम, और मुझे और कोई सपोर्ट नहीं चाहिए. सो फॉर एज द आर्मी इज कंसर्न, ऑफ द डिफेंस सर्विस इज कंसर्न, क्या चाहिए मुझे? आई एम गुड एट ट्रेनिंग, आई हैव द बेस्ट ऑफ द पीपल, आई हैव द बेस्ट ऑफ द फोर्सेस, बेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स, बेस्ट ऑफ द मेन, बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग. माई हार्डवेयर procurement, आपने इंडियन एयरफोर्स चीफ को भी सुन लिया सिंदूर के बाद में. ही ऑल्सो सेड द सेम थिंग. टेक्निकली, so far as man behind the machine is concerned, we are far superior to people. But when it comes to the hardware, अब जाके हमने MiG-21 को फेस आउट किया है. When it comes to the resources, do you really think कि यही एक रीजन था कि पुलवामा अटैक हम लोग होने से नहीं, पुलवामा has got nothing to do with resources. No, Pulwama was a different game altogether. No, the soldier asked for the helicopters and things too. Nothing. That's got nothing. See, that is a counterinsurgency grid. Yeah. Intelligence failure? Yeah, it is a counterinsurgency grid. वहाँ आपको जो चाहिए आपको मिलता है, ऐसा नहीं. वैली में आपकी जो रिक्वायरमेंट है, all requirements are met. Generally, I have seen that I have been in the valley for a long time. So I haven't faced any kind of a problem so far as resources are concerned, or money is concerned, और सपोर्ट इज कंसर्न. बिकॉज आई थिंक वहाँ वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे शायद ब्यूरोक्रेसी का इतना लेना देना है नहीं वहाँ पे. बट आई थिंक मोर टू डू विद द विल ऑफ द पीपल देयर एंड हाउ पॉलिटिकली दैट प्लेस इज सेंसिटिव. तो पुलवामा अगर हुआ है तो प्रोबेबली शायद उसी वजह से हुआ है, बिकॉज सेंसिटिविटी ऑफ पीपल शायद हम समझ नहीं पाए वहाँ पे लोगों की. I recently just, I'm not so sure because I'm not into that news reports because it's a lot of chaos. But I also heard people talking about that China used Pakistan to attack on India. So, जो Western countries are looking forward to invest in India, वो एक investment उधर रुक सके. See, there are a lot of stories at this point in time. But as a soldier, I can tell you, we were not fighting Pakistan alone. Why I say this is because Pakistan तो as an army हमारे साथ या as an air force हमारे साथ लड़ रहा था. लेकिन हम इक्विपमेंट तो अमेरिकन और चाइनीज ही के साथ लड़ाई कर रहे थे. Like you were using Chinese equipment? No, Pakistan. Okay, yeah. Obviously, their aircrafts are American and Chinese. Yeah. So basically, what we were doing was we were fighting Chinese and Americans and in Pakistan. Yeah. Look at it that way. You have spent your time in Kashmir, right? I haven't been to Kashmir ever, but all I see is a very beautiful place, right? It is a beautiful place. You know the depth of that place. Like, tell me something what a person who haven't been to Kashmir knows about Kashmir. की क्या scene है वहाँ पे? You're asking about the political scene? Political, ground level, and everything. जो भी सुनने में आता Okay, so I think I am one generation in the army who has seen the problem right from beginning, and I am seeing it till now. I remember in 1988-89, the whole thing started, and the exodus of the Kashmiri Pandits, it happened in 89-90. जब ये वहाँ हालात शुरू हुए थे, तो वहाँ इस तरह से था कि सबसे पहले उन्होंने डेमोग्राफी को चेंज करा था पाकिस्तान में. इससे भी पहले मैं अगर जाऊं तो अगर ये समझ लें हम कि पाकिस्तान के पास में इतना वेयरविदॉल नहीं था कि वो इंडिया को डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सकता था. तो उसने एक मुहिम बोलो या एक कैंपेन शुरू किया. प्रोपेगेंडा नहीं, कैंपेन शुरू किया, और वो कैंपेन था टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स. इसका मतलब आप लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट में इंडिया को लगाए रखो, उसके लिए आपका अपना इन्वेस्टमेंट लो रहेगा, लेकिन जो डैमेज है
वो आपको सालों साल आपको उसका इम्पैक्ट मिलता रहेगा. सो दिस इज द गेम विच पाकिस्तान स्टार्टेड प्लेइंग देन, राइट. So this actually started somewhere around 89-90, right? The militancy started at the peak. उन्होंने उसको किया कैसे? सबसे पहले उन्होंने वहाँ लोगों को बीच में डेमोग्राफी चेंज किया, साथ साथ उन्होंने उनका दिमाग जो है उसको पोल्यूट किया. I don't want to get into religion part because you see I come from an organization which is completely secular and मेरी यूनिट में हर तरह के लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, सब थे. So I personally respect all religions and all. So I have nothing to say about that. But yes, indoctrination जो हुआ वो religious basis पे हुआ. And जब वो हुआ तो लोगों को ये बताया गया कि भाई this is your land and India is occupying it. Whereas the story is completely different, right? So far as Kashmir is concerned, in 1948, the accession was act of accession was signed by the Maharaja and given to Sam Manekshaw and Menon, right? तब हमारी इंडियन आर्मी गई थी एयरपोर्ट कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी ट्रूप्स को लड़ने के लिए. So इसका मतलब we have the Indian the accession document with us. So that means Kashmir is actually a part of. Now obviously they went to UN, we also went to UN. UN ने बोला plebiscite कराओ, हमें समझ में नहीं आई plebiscite किस लिए कराना है. That's the point. Can you describe that word? Plebiscite. Yeah. Plebiscite is my own choice of rule. मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किसकी तरफ जाना चाहता हूँ. That's the thing. पाकिस्तान से आप plebiscite कराइए, आप ये देखिए कि जी कश्मीरी क्या करना चाहते हैं. But I have seen some interviews of people जहाँ कुछ कश्मीरी ऐसे भी हैं जो दोनों में से किसी का पार्ट नहीं होना चाहते. No, because it is over a period of time. हुआ क्या है, आपने जब तक ये मिलिटेंसी नहीं थी वहां सब कुछ खुशहाल था. आप उनकी इकोनॉमी बेटर थी, उनका ड्राई फ्रूट का बिजनेस चलता था, उनका टूरिज्म वाज ऑलवेज एट द पीक, उनका सैफरन चलता था, उनका फर्नीचर चलता था, उनका टेक्सटाइल चलता था. कश्मीर वाज अ हेवन ऑन द अर्थ. मैं कश्मीर बिफोर आर्मी भी गया हूँ और बिफोर द मिलिटेंसी स्टार्टेड मैं तब भी गया हूँ. आई हैव सीन हाउ कश्मीर लुक्ड लाइक. ओके, लेकिन इतने सालों के बाद में जब उनके खुद लोग दोनों तरफ से मरने शुरू हुए, देखिए इट्स अ कॉम्बैट. नाउ पाकिस्तान ने जब ये काम शुरू किया तो उन्होंने एज अ मिलिटेंट उनको रिक्रूट करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको इंडोक्ट्रिनेट किया गया. तो आपने उनको मिलिटेंट एज एन इंडिजिनियस मिलिटेंट रिक्रूट करना शुरू किया तो अब आप जाएंगे तो भाई गोली या मुझे लगेगी. आप हुआ क्या, वहां जो लोग थे उन्होंने ये कहना शुरू किया कि इंडियन आर्मी ने आके कश्मीरियों को मारना शुरू किया क्योंकि वो मिलिटेंट उस टाइम पे कश्मीरी थे इनिशियली. हिजबुल मुजाहिदीन एंड अदर्स, दे आर ऑल बेसिकली लोकल्स जिनको की ट्रेन किया गया बाय पाकिस्तान. उसके बाद में ऑब्वियसली हरकत-उल-इंसार आया, हरकत-उल-मुजाहिदीन आया और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ गई जो ब्रॉट इन फॉरेन मिलिटेंट्स, राइट. सो जब आपको लड़ाई करते हो तब आपको अगर कोई मारता है तो आप उसका अगेंस्ट हो जाते हैं ना. यू सेड वन थिंग कि ये चीज़ें इसलिए भी होती हैं कि इंडिया को इस चीज़ में एंगेज करके रखा जाए. एंड मोर ओवर ये चीज़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. लाइक मी लाइक व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कश्मीर जिस हिसाब से ये चीज़ें रुक ही नहीं रही. देखिए थोड़ा पॉलिटिकल इशू है. लॉट ऑफ गवर्नमेंट्स हैव और लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैव देयर ओन व्यूज. आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन बट मुझे बात एक जो समझ में आती है वो ये है कि कश्मीर रिमेन्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ एज अ सोल्जर इफ यू आस्क मी, my job is to protect the integrity of my country and Kashmir is part of that. Yeah. Now Kashmir, when I say, then I also say the Pakistan occupied Kashmir. That is also part of India, right? You took it in 1948 is another issue, but then so far as the map is concerned, it still remains mine. So as a soldier, आप मेरे से पूछोगे, I would. Are we taking that land ever? Sorry? Are we taking that land? I am not sure about that land part. I am more bothered about the kind of people there are. Yeah. हम उनको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सरकारों को ये सोचना है. उन लोगों को जमीन तो एक जमीन का टुकड़ा है, आप उसको इंटीग्रेट कर लेंगे. कल एक मिलिट्री ऑपरेशन होगा या जो कुछ भी होगा, आप वहाँ के लोगों को इंटीग्रेट कैसे करोगे मेन स्ट्रीम में, ये बहुत जरूरी है. बिकॉज 75 साल से ऊपर हो गए हैं, उनकी सोच बदल गई है. आजाद कश्मीर जो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, आप उनको इंटीग्रेट कैसे करोगे? आई थिंक द गवर्नमेंट्स मस्ट स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोस लाइंस. बट बात ऑक्यूपाइड करने की आती है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ को विद एविडेंसेस आती हैं
कि चाइना हमारे बॉर्डर में काफ़ी अंदर तक इन्वेड कर चुका है और अपने बहुत सारे बेसिस बना चुका है. आई हैवंट सीन दोज थिंग्स पर्सनली, क्योंकि मैं उस डिवीजन में कभी गया नहीं हूँ. इज इट ट्रू? देखिए, विथ चाइना वी डोंट हैव अ डिफाइंड बॉर्डर. जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ में वेस्टर्न बॉर्डर है, वो डिफाइंड है, वहाँ फेंस लगी हुई है. तो मतलब ये है कि आप ये फेंस के अगर उस तरफ जाओगे तो पाकिस्तान है फेंस के अंदर. विथ चाइना वी हैव द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो होता है वो इट्स अ डिमार्केशन ऑन द ग्राउंड, जहां कोई डिमार्केशन नाम की चीज बनी नहीं है, कोई फेंस नहीं बनी, कोई कुछ नहीं बना. अब ये एक इमेजिनरी लाइन है. अब आप इमेजिनरी लाइन में बोलते हो जी वो अंदर आ गए तो हम चले गए, यू नो. सो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा. एंड दिस इज व्हाट आई सेड इज द मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कॉर्ड विच इज अ बायलैटरल डिस्कॉर्ड. कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो वायलेशंस हो रही हैं वो एक बायलैटरल इशू रहेगा, और वो है. आज से 25 साल पहले की बात है, मैं नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयड था. वहाँ पे सुंदरोंगशू नाम की एक वैली है अरुणाचल में. नाउ हम लोग पोस्ट पे बैठे थे एंड नेक्स्ट डे वी फाउंड सुंदरोंगशू. चू होती है बेसिकली, एक रिवर होती है, चू रिवर को बोलते हैं. तो वो सुंदरोंगशू के बिल्कुल हमारी तरफ आ गए थे. द पॉइंट इज कि वो डिफाइंड नहीं है लाइन वहां पे. अब वो आए, अब वहां से हमें उनको पीछे भेजना है. वी डिड वॉट एवर वी हैड टू डू. काफी एस्केलेशन हुआ, बहुत कुछ हुआ. तो इस तरह के स्कर्मिशेस और इस तरह की ये चीजें तो होती रहती है. गलवान में हुआ, ये भी ऐसे ही हुआ. तो ये दिस इज पार्ट ऑफ बायलैटरल प्रॉब्लम. और ये प्रॉब्लम जो है चाइना के साथ रहेगी, क्योंकि हमारा कोई बॉर्डर उनके साथ डिफाइंड है नहीं. एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो वो ऐसे ही रहेगा. कुछ एक बॉर्डर्स पे बहुत स्टेबिलिटी इश्यूज हैं, या फिर कह लें कुछ एक रीजन्स में अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ एक मतलब बड़ा इशू कह लो आप. मेरे कुछ एक एथलीट्स हैं टू हुम आई टॉक टू रेगुलरली. दे आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड दे आर लाइक सो सैड कि बहुत सारी जो मीडिया है उस चीज़ को कवर भी नहीं करती. बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ केओस गोइंग ऑन इन मणिपुर. मैं अ पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, व्हाट एग्जैक्टली इशू इज ओवर देयर इन नॉर्थ ईस्ट? या पर्सनली आप मेरे से पूछ रहे हो या एज अ फौजी पूछ रहे हो? फौजी पूछूंगा. देखिए, पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे, कंक्लूजन पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आई पर्सनली फील नॉर्थ ईस्ट हैज बीन अ नेग्लेक्टेड टेरिटरी सो फार एज वी आर कंसर्न्ड. सीरियसली वहाँ कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट है. 7 states which are there, you know, चिकन नेक से आगे अगर हम निकल जाएं तो कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट है. Government sitting here, for that matter, the organization sitting here have to understand, उनको कल्चरली इंटीग्रेट करके रखना बहुत ज़रूरी है. अरुणाचल तिब्बत के साथ लगा हुआ है, मणिपुर में अपनी प्रॉब्लम है, नागालैंड में एब्सोल्युटली ट्राइबल इश्यूज हैं, अलग इश्यूज हैं. सो इस तरह से उनकी अपनी इश्यूज हैं एंड उनको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करके रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ इंडिया. एंड main thing is they are bordering Bangladesh, they are bordering China, they are bordering Bhutan. So वो सारी जो हैं वो countries को border करते हैं. तो हमारे लिए उनकी integrity maintain करना बहुत ज़रूरी है. So somewhere down the line I think all governments must understand we sensitive ये about it. चीज़ फील हुआ कि ये जो आपका मणिपुर वाला एरिया है बहुत neglected एरिया है. मतलब हम लोग शायद for granted ले गए और something. देखिए, हम लोग से मुझे मालूम नहीं आपका क्या मतलब है. नहीं, मेरा मतलब जो अभी सीन चल रहा है, आई मीन आई डू हैव रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे बहुत सारे नोन्स हैं उधर एंड दे कंसीडर देमसेल्व्स अ पार्ट ऑफ इंडिया. बट उनके मुंह से भी मैं सुनता हूँ कि दे हैव बीन अवॉइडेड लाइक दे आर नथिंग. No, it's not that they are avoiding or they don't want to be part of India or anything. ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं है. They want to be a part of India. Yeah, they are part of India. The only thing is how the governments prioritize Northeast is something which they have to decide, right? मैं बार बार यही कहता हूँ. इनफैक्ट जब भी हमारी आपस में भी कभी बात होती है तो India is not about only North India and South India. Yeah. Right? The Northeast is a bigger issue. As a military man मेरे से पूछोगे, I personally feel कि Northeast is a more challenging terrain than I have here in the North also. Terrain wise, military wise, it's a very challenging area. I was also listening to some other officers and they said कि they have been deployed to multiple places, but Northeast is just way too challenging than
other places comparatively to China? Oh, sorry, Kashmir as well. Yeah, that's what I'm saying. The terrain is very challenging there. It is not an easy terrain. Why did we lose in 1962 in Arunachal? Basically because of the kind of terrain and the kind of preparation that we had, because we never took Northeast very seriously at that time. हमने पाकिस्तान को अपना whatever problems we had with Pakistan, हमें वेस्ट में प्रॉब्लम समझ में आए, हमें नॉर्थ में प्रॉब्लम समझ में आई, लेकिन हमें नॉर्थ ईस्ट को हमने निगलेक्ट किया so far as defense was concerned in 1962. But now I don't think that is the thing. Now we are so well poised in Northeast also. The doctrines have come up, strategies have come up. We know that Northeast, so far as I'm talking about the whatever is happening in Northeast, is it like a ट्राइबल वॉर या फिर किसी ग्रुप्स की वॉर है? वहाँ एथनिक इश्यूज काफ़ी हैं, ट्राइबल्स भी हैं, उनके इंटरनल एथनिक्स हैं, एथनिक इश्यूज काफ़ी हैं. मणिपुर के अंदर अपने इश्यूज हैं, अरुणाचल के अंदर अपनी ट्राइब्स हैं और अपने इश्यूज हैं. ये तो वही है ना, जैसे किसी भी जगह जाएंगे आप तो वो दो ग्रुप होंगे तो आपस में वो सब चीज़ें तो हैं ही, वो तो बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे. Apart from these things, I would like to know something about combat operations. Like आप किन wars में अपना participation कर चुके हैं, and tell me something about that first. See, I was commissioned in the army in 1985. Yeah, I was not born. 1985 December I was commissioned. मैंने अपना बेसिक जैसे कोर्स ख़त्म किया, जिसको हम यंग ऑफिसर्स कोर्स कहते हैं, तो मैं रेजिमेंट में पहुंचा था एंड इमीडिएटली मेरे को भेज दिया गया सियाचिन ग्लेशियर. Now I'm talking about 87, right? And 85, 86, 84, 85 में सियाचिन की प्रॉब्लम शुरू हुई थी. So we were one of the first few who went over there with very little infrastructure there. Even the base camp was very very rudimentary at that time. जो base camp अब आप जो उसको बोलते हैं कि ये तो मतलब 5 स्टार हो गया है हमारे हिसाब से, बट देन उस टाइम भी बहुत रूडिमेंटरी होता था. न्यूब्रा के साथ में न्यूब्रा रिवर है, उसके साथ में एक छोटा सा FRP, एक प्री फैब्रिकेटेड हट थी, उसमें एक कुक हाउस होता था, साथ में एक छोटा सा जगह होती थी, उसको हम बेस कैंप बोलते थे. वहाँ 2-3 व्हाटएवर यूनिट्स होती थी. हम लोग बाय एयर जाते थे, या तो लेह लद्दाख से जाते थे या चंडीगढ़ से जाते थे, तो हम प्रतापपुर उतरते थे, वहाँ से एक्लिमेटाइजेशन. उस टाइम पे कंडीशंस बहुत डिफरेंट. आई थिंक माई बैच वॉज द फर्स्ट बैच जिसको स्वीडिश इक्विपमेंट मिला था पहली बार 87 में. तो उस टाइम पे वी हैड द डाउन जैकेट, डाउन ट्राउजर, कोफ्लैक बूट्स. उस टाइम पे पहली बार, उससे पहले नहीं था. सो आई थिंक वी वर द फर्स्ट फ्यू who went to glacier and who we fought over there. Conditions were extremely bad. Temperatures would go down to -25, -30. The wind speed used to be about 80 kilometers an hour. Crevices used to be there. आप चलते थे तो आपको पता नहीं होता था कि आप अगला स्टेप आपका क्रेविस के अंदर जाएगा कि आप जाएंगे, तो आपको रस्सी बांध के एक दूसरे के साथ में चलना पड़ता था. How is like a living in Siachen basically? You're telling me about that. I was very young at that time, so I think I enjoyed it. You enjoyed? So ग्लेशियर के अंदर जब हम ग्लेशियर बोलते हैं उसको, सो एक चिट्ठी जो थी वहाँ पे हमें कोई 20 या 25 दिन में एक लेटर हमारे पास आता था. मतलब उस टाइम पे पोस्टल सर्विसेज का ये हाल था. हेलीकॉप्टर से चिट्ठियाँ आती थी, हेलीकॉप्टर से खाना आता था. So that was a state. I don't think things have changed on the post. They're the same. Logistically, we were sustained by air. Living in Siachen and fighting in Siachen was a completely different ball game. You were first fighting with the weather. Yeah. And your 60-70% casualties used to be casualties due to terrain and weather. आपको हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा हो जाता था, जिसमें आपके लंग्स में पानी भर जाता है. आपकी ब्रीदिंग खत्म हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, बिकॉज ऑक्सीजन इतनी रेयर है वहाँ पे. यू आर एट अ हाइट ऑफ 18,000-19,000 फीट, तो ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ पे, आपको प्रॉब्लम होती है. रहने के लिए आपके पास में पोस्ट के ऊपर जगह नहीं है. आपके पास में वहाँ पे मेरे ख्याल 10 मीटर बाय 10 मीटर की छोटी सी पोस्ट है. आप उसके अंदर कुछ बना नहीं सकते हो. तो पैराशूट्स को हम 2-2 पैराशूट्स को इकट्ठा करके हम एक हट बना लेते थे. उसके अंदर एक बड़ा सा डंडा डाल के उसके अंदर उसको हम एक हट सी बना लेते थे. ऐसा एक छोटा सा पैराशूट एक लगता था जिसमें हम कुक हाउस होता था हमारा, और एक पैराशूट ये होता था जिसमें हम 9-10 लोग
जवान ऑफिसर जैसे जो भी है, वी यूज्ड टू लिव टुगेदर. स्नो के अंदर वी यूज्ड टू हैव बंकर्स, स्नो के अंदर वी यूज्ड टू हैव आवर पोस्ट्स. Pakistan was right across, so we could see each other, and we used to fight there. So that was the state. Sir, किस weather condition में सबसे ज़्यादा tough होता है to do the combat operations? Like सियाचिन जैसी जगह में जहाँ पे weather condition और altitude issues ऐसे हैं, या फिर valleys में, where exactly is the most toughest? No, obviously, because in high altitudes, your combat conditions are very, very tough. There is no doubt, because like I just told you, you're not only fighting the enemy, the physical enemy, you're fighting the weather. So fighting in Siachen is definitely tougher than fighting in Kashmir. Kashmir has got its own challenges. The challenges in Kashmir are, you don't know from where the bullet will come. That is the biggest challenge in Kashmir. अब मैं भी कश्मीर की बात कर रहा हूँ. आई लेफ्ट कश्मीर इन लेट 90s, राइट. मैं उसके बाद में कॉम्बैट में नहीं गया, वैसे गया हूँ. तो लेट 90s में मतलब ये कहानी थी कि आपको बुलेट आएगी कहाँ से ये पता नहीं था. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था आपके लिए. आप जब पेट्रोल पे जा रहे हो, आप एम्बुश में जा रहे हो, या आप किसी और ऑपरेशन में कॉर्डन सर्च में जा रहे हो, आपको नहीं पता कि वो मिलिटेंट कहाँ छुपा बैठा है, वो कहाँ से फायर भी कर देगा, आपको पता भी नहीं, और कौन गिरेगा, यू डोंट नो. सियाचिन में बॉल गेम दूसरा है. सियाचिन में बॉल गेम है, एटलीस्ट द एनिमी इज राइट इन फ्रंट. उसकी लोकेशन जो है वो रजिस्टर्ड है, उसकी गन्स कहाँ है हमें पता है, उसका इक्विपमेंट कहाँ है हमें पता है, उसका लॉजिस्टिक्स कहाँ से आता है वो हमें पता है, वो सब चीजें हमें पता है. सो एटलीस्ट वी नो वेयर द एनिमी इज. जो एनिमी हमें नहीं पता वहां पे वो है वेदर. अलग बॉल गेम है. एंड वैली में लड़ाई करना, अगर आप मेरे को पूछेंगे जी वेस्ट में रेगिस्तान में लड़ाई करना, राजस्थान में, उसकी अलग चैलेंजेस. वहां इक्विपमेंट फेलियर हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर्स, इक्विपमेंट फेल हो जाता है वहां पे. तो हर टेरेन के अपने 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 challenges हैं. What is like most, I won't say, I don't know if it's even appropriate to say that, not favorite one, but like the most memorable combat operations you have ever done? Obviously, Siachen, because I was awarded a gallantry award over there, so मेरे लिए तो एक major achievement है life की, and that too at a very young age. I was awarded a Sena Medal for a gallantry action over there, and I was injured there. I have a bullet injury in my foot, and I got splinters in my body. So I'm carrying all those memorabilia in my body. So obviously, I hold that as one of the and you carry those things because at the end of the day, action बहुत strong था वहाँ पे. Like when it comes to the combat forces, it's definitely different that what we see in movies, right? So burst some myths like how the actual situation looks like during the operation. बहुत फर्क है. देखिए, आप जो मूवी में देखते हो वो देखते हो ऋतिक रोशन को स्मार्ट, टॉल, वो जीप के ऊपर चढ़ के, जोंगा के ऊपर या जिप्सी के ऊपर चढ़ के एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं. अभी कौन सी पिक्चर थी, व्हाटएवर इट वाज. माय ब्रदर इन लॉ इज एन एयर वाइस मार्शल इन द एयर फोर्स. सो मैं उसके पास बैठा हुआ था. आई वाज आस्किंग हिम, अनिल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? दिस इज ऑल बुलशिट, राइट? यस, यू हैव टू हेल्प, बट देन ये सब शो है. दैट्स ओके, दैट्स हाउ मूवीज, अदरवाइज मूवी बिकेगी कैसे अगर आप असलियत वाली मूवी दिखाएंगे. आप, मैं अगेन वही आपको बता रहा हूँ, आप शायद क्या, आप तो आई एम श्योर 85 बॉर्न हो. एक बहुत पुरानी पिक्चर आई थी 90s. हाँ नहीं, ये दिस इज आई थिंक 60s की पिक्चर है. 62 की ऑपरेशन के बाद हम भी पैदा नहीं हुए थे, या उसके बाद की पिक्चर है. मूवी कॉल्ड हकीकत. उसमें 1962 ऑपरेशन की असलियत दिखाई है. मतलब लोगों के जूते फटे हुए हैं, लोगों के पैरों से खून निकल रहा है. तो वो असलियत है, और वो असलियत पिक्चरों में नहीं दिखाई जाती आजकल कौन दिखाता है ये? तो आपकी पिक्चर बिकेगी कैसे अगर आप वैसी असलियत दिखाओगे? सो कॉम्बैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम. टेल मी समथिंग अबाउट द डिवीजन यू वर लीडिंग in the forces. Basically, you told me about the artillery division, like what exactly it is. Yeah, so basically I was commissioned in the regiment of artillery. Regiment of artillery is the one which has got, now मैं आपको अगर simple language में समझाऊं तो, एक आप राइफल लेके चलते हो, है ना, उसकी एक रेंज होती है. 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, जितनी भी रेंज है उसकी, लिमिटेड रेंज. उसका जो राउंड होता है वो छोटा सा होता है ना. और इट्स बेसिकली एन एंटी पर्सनल वेपन. आर्टिलरी फायर्स लॉन्ग रेंज वेपन्स. Is it like वो वेपन होता कौन सा है? जैसे गन्स, बड़ी गन्स हो गई, जिसको आप हिंदी में हम तोप बोलते हैं. ओके, अगर आप तोप समझते हो तो शायद मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो ऑल दोज गन्स व्हिच गॉट लॉन्ग रेंज,
40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, अब तो 80 किलोमीटर, इवन मोर. We are firing missiles through. So I was commissioned in one of those regiments where we fired long range guns, and we are the ones who go with the infantry and the armor and ahead, and we are the ones who shape the battlefield for the. तो apart from artillery, आप ऐसे combat forces में भी like operations में रहे हैं where you have used like different weapons. So this is like Kashmir is that, Yeah. when you're carrying your personal weapon. Everybody has a personal weapon. A personal weapon is a rifle Yeah. or a pistol, whatever. तो आप जब कश्मीर में हैं तो आपके पास में पर्सनल वेपन है आपका, तो आपको कॉम्बैट करना है तो वहाँ आर्टिलरी गन नहीं फायर कर सकते आप, क्योंकि वो एरिया वेपन है. अगर वो उसका एक राउंड कहीं गिर गया तो चारों तरफ जो है वो 100-200 मीटर में जितने चीज़ें हैं वो लेके गिर जाएगा. तो अपने आदमियों के ऊपर, अपनी पॉपुलेशन के ऊपर, अपने जवानों के ऊपर यू डोंट फायर आर्टिलरी. तो वहां पर आपको पिन पॉइंट प्रिसिशन चाहिए. तो पिन पॉइंट प्रिसिशन के लिए तो आपको पर्सनल हथियार ही चाहिए. तो आपको एम करना और फायर करना. आई मीन यू हैव बीन इनटू वन ऑन वन मिशंस. आई मीन आपने बहुत सारे वन ऑन वन मिशंस भी किए हैं. मैं एक चीज़ ये भी जानना था, यू डोंट लाइक टू टॉक मच अबाउट हाउ मेनी people basically have been a part of that dying game, but वो क्या एक आपको mental क्या trauma देकर जाता है, कुछ issues देकर जाता है, how exactly you feel, वो adrenaline rush होता है, उसके post present और बाद के क्या mental trauma है या कुछ. I don't know. आप अगर कभी मेरी किताब पढ़ेंगे तो leadership में सबसे difficult leadership क्या होती है, what is the most difficult thing for a leader to do is to lead his men into battle where there are very minimal chances of coming back alive, right? So this is leadership. You are prepared for that. आपको एक combat में अगर जाना है तो आपको prepare होके जाते हो कि भाई या तो मैं वापस आऊंगा तो किसी को लेकर आऊंगा साथ में, या मैं वहां से वापस नहीं आऊंगा. तो उस टाइम पे ये सोचने का आपके पास में टाइम भी नहीं होता, ना ही आपकी ये सोच होती है उस टाइम पे कि मैं किसी को क्या कर रहा हूँ, या मैं आपके सामने अगर एक मिलिटेंट है या एक एनिमी है तो वो एनिमी है, राइट? इट्स योर टास्क, इट्स योर जॉब, दैट्स व्हाट आई सेड, इट्स योर ड्यूटी, यू हैव अ वेपन. मैं पॉडकास्ट से पहले आपसे यही सवाल बता रहा था आपको. भगवत गीता का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जब भगवत गीता शुरू होती है या जब महाभारत शुरू होती है, तो अर्जुन क्या पूछता है? वो कहता है मेरे को आप बीच में ले जाइए, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे चारों तरफ कौन है. अब भगवान कृष्ण बड़े तेज हैं, वो ले गए उसको सीधा वहां पे जहां उसके अपने लोग खड़े थे. ही क्रिएटेड डिलेमा इन हिज माइंड. जैसे ही वो डिलेमा उनके दिमाग में आया तो कृष्ण को उन्होंने सवाल पूछा, अर्जुन ने, ये तो मेरे अपने लोग हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा? तो वहां से जब भगवत गीता शुरू हुई तो वहां से भगवान ने सिर्फ एक, या लॉर्ड ने एक सवाल का जवाब आपको दिया, और वो सवाल था हु एम आई, मैं कौन हूं. उस सिचुएशन में भगवान ने पूछा भाई आप कौन हैं? तो उसने बोला इस वक्त तो मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो एक सोल्जर हूं. तो आपका काम क्या है? मेरा काम लड़ाई करना है. अब वहां चाहे मेरा रिश्तेदार है, मेरा दादा है, मेरा पोता है, मेरा क्या है, मुझे क्या लेना देना. सारी भगवत गीता आपकी जो है महाभारत इसी पे तो बेस्ड है. तो यही टीचिंग है मेरी और आर्मी में हमारी. हम जब कॉम्बैट में हैं, वी आर सोल्जर्स, एंड व्हेन वी आर सोल्जर्स आवर जॉब इज ओनली टू फाइट. वी डोंट थिंक कि भाई ये, अगर मैं ये सोचता बैठूंगा ना कि ये ओ यार ये तो अभी लग रहा 20-22 साल का है यार, इसका बच्चा होगा यार, हो गया फिर तो, या तो मेरे को ठोकेगा वो, मेरे को नहीं, मेरे साथ वाले को ठोकेगा. तो उसका नहीं 20-22 साल का बच्चा. मैं और भी जब पॉडकास्ट सुनता हूँ तो आई वाज लिसनिंग टू वन पर्सन हु हैव बीन अ पार्ट ऑफ कॉम्बैट, एंड ही वाज टेलिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ कश्मीर कि व्हेन देयर इज अ टीनेज गाय हु इज होल्डिंग एन AK-47 और वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, राइट, एंड यू नो ही विल गोइंग टू शूट यू, and then you don't have any other option. You have to. When you don't have any option, then you shoot back. Yeah, I mean, it's as simple as that. And there is no human rights stuff over. देखिए ऐसा है कि डार्विन की थ्योरी है ना, सर्वाइवल है ना, और आपको जब समझ में आ रहा है कि you have a person with a weapon coming in front of you, वो मजाक करने तो नहीं आ रहा ना, आपको हथियार दिखाने तो नहीं आ रहा ना, उसका भी तो हाथ ट्रिगर पर है, तो फिर क्या सोच रहे हैं? तो in combat we don't think all these kind of things. We know that if this is a threat, we have to neutralize the threat. If you don't neutralize the threat, then either you get neutralized or somebody else will get neutralized. We don't talk about all these kind of things in combat. Combat में life pretty simple है. Decision making is not a problem. You have to make an assessment.
ये सिचुएशन क्या है, आपका काम क्या है, आप काम कीजिए अपना. So, how was your last day in the army? And before that, the last day, explain me a little about the title you're having, and that is Sena Medal. Okay, so Sena Medal is basically a gallantry award. It is given to those who exhibit, gallantry beyond the call of duty. Yeah. So बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं लोग फौज में. कॉल ऑफ ड्यूटी जो है, अगर आप एक नॉर्मल ड्यूटी के टाइम पे अपना काम कर रहे हो तो वो दैट इज योर जॉब. बट इफ यू गो बियॉन्ड दैट एंड यू पुट योर ओन लाइफ टू रिस्क and you achieve the mission, so it's beyond the call of duty. So it's a gallantry award. And that was you got for Operation Siachen? Yeah, that was for Siachen. And this is given by approved by the President of India and given by the Chief of Army Staff to you. So I got this in the operation for 87. I got it in 89. So I was awarded. So that is about Sena Medal. How was your last day on your service? My last appointment in the army was, I was the president of a services selection board, SSB Allahabad. I don't know whether you guys understand SSB or not. SSB is the selection center where candidates come and you select them to be officers. So I'm a trained assessor and I was heading the board at that time. My last day was, I was selected from the same selection center from where I retired. That's an achievement. And though obviously the board was different, I was selected from 11 board and I retired from 19, or I took a premature in 19 from 19 board. But I retired at 4 o'clock in the evening. Until 4 o'clock, I was taking the interview. And I wanted to actually touch a record of taking 5,000 interviews in my career. So I said, no, let me complete my 5,000. So and I did. So I completed exactly 5,000 interviews. And so obviously there is too much of nostalgia which is attached to the army. More than me, my children, both of the children, like वो basically फौजी हैं, दोनों फौजी brats हैं. So they were more this thing. How will you adjust? How will you do this? How will you do that? They did a lot of things for me. They made things easier for me to do that. From turning towards the corporate, what are few rules basically जो आप आज भी use करते हैं अपने past से अपने present में, in your regular life or maybe so far as the corporate is concerned, there are 2-3 things which I personally never compromise upon. Firstly is my value system. I'm not saying that there is no middle ground. आपकी वैल्यूज़ फ़र्क हो सकती है, मेरी वैल्यूज़ फ़र्क हो सकती हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जहाँ मेरी कोर वैल्यूज़ पे बात आती है, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट. सो like one of the core values of a person should be integrity. There cannot be a compromise on integrity. Right? So I carry my value system, I would say that on my cuff. I don't compromise on my value system. The other thing that I carry from the army is the way I have been trained and how I should train people. Training has been very strong with me in the army, and in my regiment also I have been known to be a very harsh training master. So I train my people very, very strongly and harshly in corporate. In fact, they come back and tell me, जिस तरह से आप train करते हो, जिस तरह से आप बात करते हो. So I think I take a lot of pride in training because I know अगर आपने train ठीक किया, वो बोलते हैं ना फौज में, the more you bleed in peace or the more you sweat in peace, the less you bleed in war. So वही है, आप corporate में भी यही काम करो. जब आपकी तैयारी हो रही होती है तो you sweat hard, so you'll bleed less in the war. So before I move towards the end, there's a quick rapid and fire basically I prepared for you, and you'll be having 2 options, and it starts AK-47 or INSAS. Oh, AK-47. Prefer enemy, nature or humans? Human. Most badass piece of military gear you ever used? My backpack. Backpack. That is bad. Snow boots or desert boots? No, leather boots. If not army, what would you have been? Maybe a professor or a teacher. First thing you miss about uniform life? My love for uniform. I mean, I miss everything about uniform.
first thing, kya, I miss everything about That uniform. adrenaline rush, probably, right? No, not really. The entire culture, the entire background, the entire ethos of the uniform. One habit from army life your family still complains about. They say that you take stupid decisions at home. I could have taken big decisions outside, Yeah. but they still say, तुम उस time पे भी stupid decision घर में लेते थे, अभी भी वही करते हो. How can somebody say that? More dangerous, enemy fire or corporate deadline? Oh, I think the corporate. Tea in the trenches or coffee in the boardroom? Obviously, eat in the trenches. Why? Because उसका मजा ही अलग है. आपके साथ में वो लोग बैठे हैं जिनके साथ में आपने खून बहाया, पसीना बहाया, उनके साथ बॉन्डिंग ही फर्क है. ये बॉन्डिंग अलग होती है. Your Sena medal in one word. In one word, Yeah. I think it's my biggest achievement in life. Legacy or loyalty? Oh, legacy. Favorite war movie you actually respect or feels relatable, like more realistic to you? It's not a war movie, I wouldn't say it's a war movie, but Raided Entebbe was a movie which I saw, and I'm totally floored by how Israel carried out that operation in Entebbe. Outstanding. It is. Outstanding. 165 passengers evacuated Yeah. from Entebbe. No casualties from any side except the commander who died. If you had one more mission today, would you go? Go back to the army and let them decide where they want to put me. Yeah. Crazy. The last question: how you want people to remember you in future? Why should they remember me? I have come here to do my job. I have done my job, or I will do my job the way it is charted for me. As simple as that. Yes. The only thing is, if they feel that there is a vision which I carried and I've been able to touch their lives in some way, they should just carry on with that vision. Otherwise, they have their own choice. They should live their own life. You see, soldiers always fade away. I would also want to simply fade away. याद क्या रखना है यार? Let's fade away in life. Let the new generation come and take over from you. So it was such a great time having Colonel Vineet with us, and I'm pretty much sure more than you guys what you have learned. मैंने तो enough सीखा. So stay tuned with the coming episode. Thank you, Colonel Vineet. Thank you very much, Ashish, and it's Thank been you nice so talking to you. See you. Thank you.